Now exercise. You will get such type of situation in future. Okay? Orally तो मैंने बता दिया है, एग्जैक्ट सम लेके मैं बताऊंगी आपको. When area is given and some missing term you are asked to find out, at that time you have to take area in mode. Question number 1. Find the area of the triangle where, पहला क्वेश्चन, vertices are, एक को मैंने a नाम दे दिया, 2, 3 को मैंने a नाम दे दिया, so it is x1, y1. Another vertices को मैंने b नाम दे दिया, -1, 0, that is x2, y2. Third vertices को मैंने c नाम दे दिया, 2, -4, so I take 2 as x3 and -4 as y3. Clear? Now I have to find out the area. Now see what is the formula for area of triangle ABC. It is 1/2 time in bracket, बहुत दूर दूर आ गया, it is 1/2 time in bracket x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2. Clear? So put the value. It's 1/2 time. Bracket में क्या आएगा? 2 into 0 plus 4. Clear? -1 into -4 -3. Right? Plus 2 into x3 is 3 and y1 is 0. Do the calculation. It is 1/2. ब्रैकेट में क्या आएगा? 2 4 जा 8 प्लस -7 into 1 is +7 plus 2 into 3 is 6. So I am getting 21/2 square unit. Okay? Very simple sum. Now second sum. Vertices of triangle are A -5 -1, that I consider as x1 y1. B, that is 3 -5, that I consider as x2 y2. And C, that is 5 2, that I consider as x3 y3. Clear? Now I should find out the area. Area of triangle ABC is 1/2 time x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2. Clear? Put the value. 1/2 time x1 is -5, y2 is -5 minus y3 is 2 plus x2 is 3. देखो x2 is 3, this is 2 plus minus minus plus 1 because y1 is -1, so it becomes +1 plus 5 into y1 is -1 and y2 is -5, so it becomes +5. Now be alert in plus taking plus minus sign. हाँ, एक मिस्टेक हो जाएगा तो पूरा गलत हो जाएगा. -7 into -5, so +35 plus 3 into 3 9 and plus 4 into 5, so 20. So it is 1/2 time. Total आया 64. So it is 32 square unit. Clear? Clear? Very simple. Now question number 2. ये उल्टा है. पहले में vertices were given and area you are asked to find out. Here area is given and you are asked to find out the missing term. In each of the
फॉलोइंग, जो मैंने बोला था ना मोड़ लेना इधर लेने का, फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ k for which the points are collinear. Now see first question. A is given as 7 minus 2, that is x1, y1. B is given as 5, 1, that is x2, y2. C is given as 3k, that is x3, y3. Clear? And second question is given like this. A is given as 8, 1, so that is x1, y1. B is given as k minus 4, so my x2 is k and y2 is minus 4. My C is given as 2, minus 5. So my x3 is 2 and y3 is minus 5. Clear? Now I am asked to find out the k. Clear? इधर एरिया नहीं दिया है, पॉइंट सर्कल दिया है, तो इधर मोड़ नहीं लेने का. नाउ सी, ए बी सी आर कोलिनियर. मैंने सोचा एरिया दिया है, हियर एरिया नहीं दिया है. एबीसीआर कोलिनियर दिया है, तो कोलिनियर में आपको 0 है तो मोड़ लो न लो कोई फर्क नहीं पड़ता है. x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 minus y2 is 0. Clear? So it implies I put the value of x1 is 7, y2 is 1 and y3 is k. फिर x2 is 5, y3 is k and y1 is minus 2, so it is plus 2. फिर x3 is 3, y1 is minus 2 and y2 is 1. So it implies 7 minus 7k, open किया, 5k plus 10 minus 3 into plus 3 into minus 3, so minus 9. So I am getting minus 2k plus 8 is 0. So k is 4. इधर मोड़ लोगे तो अभी k is 4 ही आएगा. मोड़ ऑफ 8 minus 2k is 0, then 8 minus 2k is 0. Because 0 में मैं प्लस और माइनस 0 नहीं ले सकती. एरिया दिया होता तो मैं प्लस और माइनस लेती. सो एरिया के सम में k की 2 वैल्यूज आएगी. कोलिनियर में एक ही आई, मगर यही सम में अगर एरिया दे दिया गया है, देन वी शुड टेक दिस एक्सप्रेशन इन मोड. सो एक बार आप प्लस से इक्वेट करेंगे, एक बार माइनस से. सेकंड में एबीसीआर collinear. Okay, so naturally it implies x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2 is 0. Right? That implies आप वैल्यू लिख दो 8 minus 4 plus 5 because y3 is negative. Plus k into minus 5 minus 1 plus 2 into 1 plus 4 is 0. Implies 8 minus 6k plus 10 is 0. Implies 6k is 18. That implies k is 3. Clear? Clear? Now question number 3. Find the area of the triangle formed by joining
the midpoints of the sides of triangle. Find the area of a triangle formed by joining the midpoints of the side of triangle whose vertices are 0, -1, then 2, 1, and third vertex is 0, -3. And after getting area of the new triangle formed by joining their midpoints, find the ratio of this area to area of the given triangle. Okay? Do you understand the question? First we have to find out the area of a triangle formed by joining the midpoints of AB, BC and AC. ABC is my given triangle. Okay? A का कोऑर्डिनेट दिया है 0, -1, B का कोऑर्डिनेट दिया है 2, 1, C का कोऑर्डिनेट दिया है 0, 3. And now I should find out three midpoints. D, E and F are the three midpoints of AB, BC and CA respectively. So I will form a triangle DEF, whose coordinates are, D का कोऑर्डिनेट आएगा 1, 0, midpoint 0 + 2/2 and -1 + 1/2. Then E का coordinates आएगा 1, 2, because midpoint of BC is 2 + 0/2 and 1 + 3/2. And F का coordinates आएगा 0, 1. Clear? Because 0 + 0/2 and -1 + 3/2. Now I should find out area of triangle ABC as well as area of triangle DF. First find out area of triangle DF, because that's what they have asked to find out. First question is find out area of triangle DF. तो मैं इसको x1 y1 ले लूंगी, इसको x2 y2 ले लूंगी और इसको x3 y3 ले लूंगी. And I put it in a formula 1/2. x1 की जगह है write 1, y2 minus y3, so that is 2 - 1, plus x2 मतलब 1, y3 minus y1 is 1 - 0, plus x3 is 0, and y1 minus y2 is 0 - 2. So my answer will be 1/2 time 1 into 1 is 1, plus 1 into 1 is 1, plus 0. So it is 2/2. So it is 1 square unit. तो पहला आ गया. Find the area of triangle formed by joining the midpoint of side of triangle whose vertices are this, this and this. तो triangle DEF का area मेरा आ गया. Now I am asked to find out the ratio of this area with the area of original triangle. So I should find out area of triangle ABC. इसके लिए मैं लूंगी 1/2. इसमें मैं x1 y1 क्या लूंगी 0 - 1, x2 y2 2, 1, and x3 y3 0, 3 लूंगी. तो it is 0 into 1 - 3. Clear? Plus 2 into 3 minus of -1 plus 1, plus 0 into -1 - 1. तो इसका आया 1/2 टाइम 0 plus 8 plus 0. So it is coming 4 square unit. Okay? देखो ABC का आया 4 square unit और DEF का आया 1 square unit. So what is the ratio? Tell me. What is the ratio? Ratio is 1:4. Clear? Ratio is 1:4. Clear? Question number 4. Fourth question is find the area of quadrilateral. Quadrilateral मतलब polygon with
4 side, okay, and 4 vertices, whose vertices are, क्या दिया है, टेकन इन ऑर्डर, वर्टाइसेस आर टेकन इन ऑर्डर, मतलब पहले को मैं ए लूंगी, दूसरे को बी, तीसरे को सी, चौथे को डी, तो ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, ओके, लाइक दैट. A is -4 -2, B is -3 -5, C is 3 -2, and D is 2 3. Clear? Now first I will draw the figure. ABCD is a quadrilateral, okay. I write here A, that is -4 -2. I write here B, that is -3 -5. I write here C, that is 3, -2. And I write here D, that is D is 2, 3. In order to find out area of this quadrilateral, I should divide quadrilateral into two parts, two triangles. So now I can say area of quadrilateral ABCD is area of triangle ABC plus area of triangle ADC. Clear? ABC and ADC. So पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC. उसमें मैं इसको x1 y1 ले लूंगी, इसको x2 y2 ले लूंगी और इसको x3 y3 ले लूंगी. ओके, नाउ आई पुट द वैल्यू 1/2 टाइम x1 मतलब -4, y2 -y3, so y2 you see -5 and y3 is -2, so minus plus 2. x2 is -3. Then y3 minus y1, so y3 is -2, y1 is -2, so minus plus 2. Plus x3, y1 minus y2, y1 is -2 and y2 is minus plus 5. Do the calculation. 1/2 अंदर आया -3 into 4, so -12 plus 0 plus 9, 3 3 9. So it is 21/2 square unit. Okay, एक एरिया आ गया. अब एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC, उसमें मैं क्या करूंगी, इसको एक डी को मैं x1 y1 ले लूं, बराबर. फिर डी को मैं DBC क्यों लिखा, DAC, DBC नहीं DAC. ओके, DAC में मैंने क्या लिया, 1/2. डी के कोऑर्डिनेट को मैंने x1 y1 ले लिया, -4 इंटू -2 -3. क्लियर? -2 ए को मैंने x1 y1 ले लिया, तो -4 इंटू -2 -3 प्लस 2 इंटू -2 प्लस 2 एंड प्लस 3 इंटू क्या आया, 3 इंटू -2 नहीं +2 +3. यू कंसिडर ए को x1 y1, फिर डी को x2 y2 ले लिया और सी को x3 y3 ले लिया. ओके, सो इट इज 1/2 टाइम अंदर आया 20 प्लस 0 प्लस 15, सो इट इज कमिंग 35/2 स्क्वायर यूनिट. देखो दोनों ट्राइंगल का एरिया अलग अलग आ गया. नाउ व्हाट इज द एरिया ऑफ ABCD, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज एरिया ऑफ ABC प्लस एरिया ऑफ ADC. तो हम ऐड करेंगे ना, क्या आया, 21/2 प्लस 35/2, क्या आया, 56/2.
So that is 28 square unit. What is the area of quadrilateral? 28 square unit. Okay. There are some tricks also. जैसे ट्राइंगल की मैंने बताई थी ना, वैसे क्वाड्रिलेटरल की भी है. ट्राइंगल में 3 डायगोनल पॉजिटिव 3 नेगेटिव, इसमें 4 डायगोनल पॉजिटिव 4 नेगेटिव, 8 टर्म आएगी. ओके. क्वेश्चन नंबर 5 हम मैथमेटिकली जाएंगे. मीडियंस, मीडियन डिवाइड, यू नो median divides triangle into 2 parts. Okay, 2 triangle. Median divide triangle into 2 triangle of equal area. Okay, you know this thing. Verify this result with triangle ABC, okay, whose vertices are given as R. A दिया है 4, -6, B दिया है 3, -2 and C दिया है 5, 2. पहले हम फिगर बनाएंगे. ट्राइंगल ABC बना देते हैं. ओके, दिस इज माई A, दिस इज माई B, दिस इज माई C. क्लियर. C का कोऑर्डिनेट 5, 2, इसको मैंने x3, y3 ले लिया. B के कोऑर्डिनेट को मैंने x2, y2 ले लिया. इट इज गिवन एज 3, -2. A के कोऑर्डिनेट को 4, -6 दिया है, उसको मैंने x1, y1 ले लिया. And I draw AD median on BC. So D के कोऑर्डिनेट को मिड पॉइंट ऑफ BC, so 4, 0 ले लिया. 5 + 3/2 and 2 - 2/2. Now I have to find out area of triangle ABD and area of triangle ACD. अगर दोनों का एरिया सेम आ गया तो नो प्रॉब्लम. ओके, क्लियर. अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी भी पूछा है और प्रूव करने को पूछा है कि प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज 2 टाइम एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी, देन वी हैव टू फाइंड आउट एरिया ऑफ एबीसी ऑल्सो. ओके, बट हियर यू आर आस्क्ड टू फाइंड आउट, asked to verify the result and median divide the triangle into 2 triangle of equal area. So here only I have to find out area of triangle ABD and area of triangle ADC. Okay, can you find out? See, I give you hint. Area of triangle ABD, इसका एरिया आएगा 3 यूनिट और ए साइड का एरिया भी आएगा 3 यूनिट. सो बोथ आर इक्वल एंड यू कैन डू दिस सम बाय योर ओन. ओके, एक दोनों का एरिया, एक को नंबर 1 दे दो, एक को नंबर 2, और फिर आप बाय 1 and 2 यू कैन से एरियाज आर इक्वल. ओके, सिंपल फॉर्मूला ऑफ एरिया you should apply, nothing else. So that complete your almost all sum of your textbook, all 3 exercise, and few illustration also I have included in my discussion.